we could have a good chase. Having said that, when you put so many runs on board, there's scoreboard pressure for the team batting second. बिल्कुल के आपने ठीक कहा। और यहाँ 28 ओवर 187 पर 1। नए ओवर की शुरुआत, हाई रेस रहो, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने की कोशिश की उसे रचिन रविंद्र ने, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद हारिस रऊफ अपनी तेज गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु से हम आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं विश्व कप के 35वें मुकाबले में, जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। हारिस रऊफ राउंड द विकेट, दूसरी गेंद, और इस बार एफर्टलेस स्ट्रोक। अंपायर देख रहे हैं क्या गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर गई है या नहीं। 4 रन का इशारा अंपायर के द्वारा। पिछली गेंद पर जो कट शॉट खेलना चाहते थे रचिन रविंद्र, इस बार गेंद के आने का इंतजार किया और पहले ही भाप लिया था एक और शॉर्ट बॉल आएगी। केवल बल्ले को गेंद से टच भर किया, गोल्डन टच जिसे हम कहेंगे, और गेंद सीधी विकेट कीपर के ऊपर से निकाल दी 4 रन के लिए। He made it look so simple to Ravindra, but remember, Haris Rauf was going around 150 clicks. He had to lean back, get perfect contact, the top half of the bat, well over wicket keeper. That ramp shot executed to perfection. Glorious stroke. मिड ऑफ मिड ऑन 30 यार्ड सर्कल के अंदर रखे हैं हारिस रऊफ ने। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक इस ओवर में, इस मैच में गेंदबाजी हैं। रऊफ की ये गेंद, अच्छी गेंद, राउंड द विकेट कोण बनाती हुई अंदर की तरफ आई, गुड लेंथ गेंद। बहुत जल्दी गेंद के पीछे गए रचिन रविंद्र, कलाई के सहारे टर्न किया, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद फील्ड हुई, कोई रन नहीं। 6.70 रन प्रति ओवर का औसत। रचिन रविंद्र 80 पर पहुंच चुके हैं। 75 गेंदें खेली हैं उन्होंने। विलियमसन खेल रहे हैं 60 के निजी स्कोर पर। आईसीसी रैंकिंग में इस समय न्यूजीलैंड की टीम 5वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 3रे स्थान पर। पिछले 2 फाइनल खेले न्यूजीलैंड ने, लेकिन विजेता नहीं बना है विश्व कप का। हारिस रऊफ, एक और पटकी गेंद, इस बार पुल करने की कोशिश, वाइड का सिग्नल अंपायर की तरफ से, और इस वाइड के सहारे 1 रन और जुड़ेगा न्यूजीलैंड के खाते में। न्यूजीलैंड 192 1 विकेट पर तक को, जिसे शतक में तब्दील करना सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि यही आपको सिखाया जाता है कि जितनी अपनी पारी को लंबा करेंगे उतना आप अपने अंदर आत्मविश्वास लेकर आएंगे और विपक्षी आपसे परेशान होंगे, क्योंकि यही आपके असली धैर्य की परीक्षा। और इस समय अब टेम्परेचर लगभग 26 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है बेंगलुरु का। हारिस रऊफ पवेलियन एंड की ओर से एक और बढ़िया बॉल ऑफ और मिडिल स्टंप पर पिच होने के बाद तेजी के साथ स्टंप की तरफ आई, शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद, 144.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की। हारिस रऊफ अपनी तेज गेंदों से परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाजों को, और विलियमसन ने जिसे आराम से खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट पर। जब तक गेंद फील्ड हो, 1 रन का मौका था। अब्दुल्ला शफीक वहां शॉर्ट कवर्स पर मिड विकेट पर फील्डर थे जिन्होंने गेंद फील्ड की, और 1 रन के साथ विलियमसन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 61 पर। न्यूजीलैंड 194 1 विकेट पर। हारिस रऊफ, और इस बार पिकअप शॉट जिसे कहेंगे, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर सीधी दर्शकों के पास गेंद, 6 रन। रचिन रविंद्र, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और इस बार जैसे इंतजार ही कर रहे हो। 2 शुरुआती शॉर्ट गेंदें मिली थी जब इस ओवर में हारिस रऊफ ने गेंदबाजी शुरू की थी, और ये तीसरी शॉर्ट गेंद जिसने बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट किया, और न्यूजीलैंड ने अपने 200 रन पूरे किए 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट कितने 200 रन कितनी गेंदों पर बने हैं, ये थोड़ा सा बनाएं। 21वें ओवर में ये 200 रन। रचिन रविंद्र का शानदार शॉट, जितनी तारीफ की जाए कम है इस शॉट की। डेविन कॉनवे के साथ पारी की शुरुआत की, और इस समय केन विलियमसन के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। 87 पर पहुंच चुके हैं, और वहां न्यूजीलैंड का स्कोर 29 ओवर के बाद 200 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर पूरा किया था गेंदबाज हारिस रऊफ ने। 6 ओवर कोई मेडल नहीं, 49 रन कोई विकेट नहीं, 8.16 रन की इकोनॉमी उनकी।
पारी के 30वें ओवर की शुरुआत। पहली गेंद विलियमसन ने पुल किया, इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ, लंबा गैप है, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर, उसके अलावा कोई भी फील्डर आउटफील्ड में नहीं है, और जो दूसरा फील्डर है वो उनके दाहिनी तरफ है डीप फाइन लेग पर। तो पहली गेंद पर चौका, प्रेशर बनाते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन और रचिन रविंद्र दूसरे विकेट के लिए शतक की साझेदारी कर चुके हैं। विलियमसन 65 पर, हसन अली 5.1 ओवर, कोई मेडल नहीं, 29 रन और एकमात्र विकेट लेने वाले गेंदबाज। मिड ऑफ मिड ऑन ऊपर रखा है, एक डीप फाइन लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, उसके अलावा एक फील्डर डीप पॉइंट और एक डीप थर्ड मैन। ये 30 यार्ड सर्कल के बाहर के फील्डर। शाहिनशाह अफरीदी कुछ बात करते हुए गेंदबाज के साथ कि कहां पे गेंदबाजी की जाए। केन विलियमसन के लिए 7 चौके 1 छक्का केन विलियमसन की पारी में आया है। 6.99 रन प्रति ओवर का औसत आ चुका है बल्लेबाजी में न्यूजीलैंड टीम का, और यहां से अब वे अपने स्कोर को और बड़े स्तर पर देखेंगे। विलियमसन 65 पर 58 गेंदें खेली हैं और रविंद्र खेल रहे हैं 87 पर 78 गेंदें उन्होंने खेली हैं। हसन अली की ये गेंद थोड़ा सा पहले ही लेग साइड पर चले गए थे, इनसाइड आउट का स्ट्रोक खेलना चाहते थे केन विलियमसन। काबिले तारीफ गेंदबाज हसन अली की, उन्होंने देख लिया था कि किस तरह से थोड़ा सा जगह बना रहे हैं स्ट्रोक खेलने के लिए, अपनी गेंद की गति को कम किया, थोड़ा सा शॉर्ट गेंद रखा, जिसे कवर्स के बीच में खेलकर 1 रन बनाया। केन विलियमसन ने अपने निजी स्कोर में इजाफा किया, वे पहुंच चुके हैं 66 पर, 137 गेंदों पर 200 रन, 137 की पार्टनरशिप दोनों के बीच हो चुकी है। इस बार एक और अच्छी गेंद, जिसे विकेट के बहुत नजदीक खेलकर रन के लिए दौड़ लगाए। मिड ऑन पर फील्डर थे, लेकिन उसके बावजूद स्टंप पर निशाना नहीं लग पाया बाबर आजम का। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर उन्होंने कोशिश जरूर की थी, और 1 रन और रचिन रविंद्र के लिए। 88 पर रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड का स्कोर 206, 1 विकेट के नुकसान पर। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम एक बहुत ही पुराना स्टेडियम है भारत का, 40,000 की कैपेसिटी, 1969 में यह अस्तित्व में आया था। एम चिन्नास्वामी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे थे बीसीसीआई के 1977 से लेकर 1980 तक, उनके नाम पर यह स्टेडियम है। इसी बीच हसन अली, एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर पिच होने के बाद अंदर की तरफ आई। विलियमसन ने कलाई के सहारे गेंद को खेला 2 फील्डर के बीच में, लेकिन शाहिनशाह अफरीदी मिड ऑन पर तेजी के साथ अपने दाहिनी तरफ गए, गेंद को फील्ड किया और रन बनाने से रोका उन्होंने केन विलियमसन को। विलियमसन इस समय खेल रहे हैं 66 पर, 60 गेंदें खेली हैं, 7 चौका और 1 छक्का उनकी पारी में, 110 का उनका स्ट्राइक रेट। रचिन रविंद्र 88 रन बनाकर खेल रहे हैं। इसी बीच एक और बेहतरीन स्ट्रोक, केन विलियमसन अपने रंग में, एक टप्पे के बाद गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। और जैसा मैं बता भी रहा था कि केन विलियमसन बहुत देर तक खामोश नहीं रह सकते हैं, उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। जहां चाहते हैं वहां रन बनाते हैं, और जब वे सेट हो जाते हैं तो फिर तो केन विलियमसन अपने क्लास को बताते हैं, और युवा जो बच्चे इस मुकाबले को देख रहे हैं वो बहुत कुछ सीख पाएंगे केन विलियमसन की बल्लेबाजी से। 61 गेंदों पर 70, न्यूजीलैंड 210 पे 1। एक बार फिर वही कोशिश, आगे निकलकर ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन गेंद की फिर से जो लंबाई है उससे कम किया गेंदबाज हसन अली ने। ओवर पूरा हुआ, पारी के 30 ओवर के बाद पहले बैटिंग करते हुए इस मुकाबले में पाकिस्तान के विरुद्ध न्यूजीलैंड का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 211 रन। बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी केन विलियमसन और रचिन रविंद्र के बीच चलती हुई। 114 गेंदों पर 142 रन की नाबाद साझेदारी हो चुकी है, जिसमें विलियमसन ने 71 रन बनाए और रविंद्र ने 59 रन बनाए हैं। तो 1 ओवर और पूरा हुआ। इस ओवर के साथ गेंदबाजी का विश्लेषण मैं बता दूं, हसन अली 6 ओवर, कोई मेडल नहीं, 36 रन और 1 विकेट। इस मैच में कुल मिला के 6 बॉलर से बॉलिंग कराई गई है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के द्वारा।
शाहिनशाह अफरीदी 6 ओवर कोई मेडल नहीं, 39 रन कोई विकेट नहीं। हसन अली 6 ओवर कोई मेडल नहीं, 36 रन 1 विकेट। इफ्तिखार अहमद 6 ओवर कोई मेडल नहीं, 45 रन कोई विकेट नहीं। हारिस रऊफ 6 ओवर में 49 रन कोई विकेट नहीं। मोहम्मद वसीम 4 ओवर कोई मेडल नहीं, 17 रन कोई विकेट नहीं। काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया मोहम्मद वसीम ने इस मुकाबले में अभी तक। और आगा सलमान 2 ओवर में 21 रन बहुत महंगे साबित हुए। और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बारे में मैं बता रहा था कि जो प्रेसिडेंट रहे बीसीसीआई के एम चिन्नास्वामी, उनके नाम पर यह स्टेडियम है। और काफ़ी समय एडमिनिस्ट्रेटर रहे, लगभग 4 दशक तक कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के। और बहुत बड़ा योगदान है कर्नाटक के क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में एम चिन्नास्वामी का। और ये मैदान बहुत से विशिष्ट कारणों से भी जाना जाता है। रनों से भरा हुआ विकेट है यहाँ का। नवीन-उल-हक ने अपने 100वें टेस्ट मैच में यहाँ सेंचुरी लगाई थी। अनिल कुंबले ने अपना 400वां टेस्ट विकेट इस ग्राउंड पर अर्जित किया। महान सुनील गावस्कर ने 96 रन अपनी अंतिम पारी में टेस्ट मैच में बनाए थे, जो पाकिस्तान के विरुद्ध थे। भारत उस मुकाबले में जीत नहीं पाया था, लेकिन 96 रन की बेजोड़ पारी थी उनकी। सचिन तेंदुलकर के नाम पर भी इस मैदान पर एक और कारनामा है। एज ए कैप्टन उन्होंने अपना अंतिम मुकाबला यहाँ खेला था साउथ अफ्रीका के विरुद्ध फरवरी 2000 में। 2011 का विश्व कप हम सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो टाई मैच हुआ था, वो भी इस मैदान पर हमेशा याद किया जाएगा। और क्योंकि आप उस मैच में शामिल थे, उस मैच में कमेंट्री कर रहे थे, तो क्या यादें आपके दिमाग में आती हैं जब आप इस बेंगलुरु के स्टेडियम पर, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर आते हैं? Yes, indeed. A lot of opportunity to discuss World Cups of the past as the drinks are being taken. And yes, I was witness to that wonderful game of cricket, Damodar, at this very stadium. England and India played that tied game. And at one point in time, one probably thought that India had battered out England. But England came back beautifully. And we had the privilege of seeing 2 wonderful hundreds, one from none other than the god of cricket, Sachin Tendulkar, and one of his better hundreds that I've seen. I mean, all his hundreds have been wonderful. But if one were to pick on that 100 over here, was something that we'll all remember for a long time. And Andrew Strauss for England also scored 100, and that match went down to the wire. In the end, it was tied. And we saw some wonderful stroke play, excellent fielding, and also some good spin bowling from both sides. And in the context of that World Cup, that was such an important game. It was crucial for both the teams, and both the teams ended up tying that match. And we will remember the Sachin Tendulkar 100 over there, and as well as the Andrew Strauss 100. So at the end of 30 overs, New Zealand 211 for 1. Now, very often it's said as a thumb rule that you should be able to double the score that you have at the end of 30 overs if you don't lose any wickets. And if that happens over here, we're looking at a score well in excess of 400. Here is Wasim starting a fresh over from the pavilion, and this time to Williamson, who's lofted it on the onside. He'll get a couple for that. He's 73 with that couple, and New Zealand 213 for 1. The New Zealand run rate well above 7 runs per over already. New Zealand in the first 10 overs scored 66. From 11 to 20 scored 59, and from 21 to 30 overs they have scored 86 runs, 8.6 runs. Thank you, Venkat Balreddy. And that tells you how well these two batters have dominated as they continue that short in length, pulled away, the short arm pull past mid wicket for 4. Waited for it from Mohammad Wasim and pulled it as late as possible, waited for the ball to come onto the bat, positioned himself perfectly for that short arm pull. This brilliant batter, Kane Williamson, and deposited it past orthodox mid-wicket for 4. 149 now this partnership, one short of 150.
What a partnership. Wasim this time to Kane Williamson and plays it gently to a short lifting delivery outside the off stump into the covers. And no runs result. It remains 217 for 1. Agha Salman, the fielder in the cover region. So a little bit of a leather hunt for the Pakistani fielders in the last few overs. The New Zealand batters have peppered every part of this ground at Chinnaswamy. Here's Wasim this time to Kane Williamson, plays it gently forward and they steal a single. Beautifully played with soft hands, gently on the offside. They know Agha Salman is somewhere halfway down inside the 30-yard circle, and they go around for a single that brings up the 150 partnership between Rachin Ravindra and Kane Williamson. Hugely applauded by this knowledgeable Bengaluru crowd at the Chinnaswamy Stadium. They knew their cricket so well, does this crowd. Readjustments in the field by Wasim. Wants that long leg to go finer to somewhere around final leg. There's one man at backward square leg. That was down the leg side, probably just took the flannels on the way, I thought. Initially I thought that's probably a wide. Probably just tickled onto the trousers or the flannels of Rachin Ravindra on the way to Mohammad Rizwan. That's why a dot ball. 86 in the last 10 overs, 21 to 30. That tells you the way in which bat has dominated ball. Mohammad Wasim into Rachin Ravindra. That's a much better ball. On the off and middle stumps, gathers momentum after pitching. And Rachin Ravindra was looking for an aggressive stroke on the offside. At the last moment is content with a half push, half drive. And at the end of 31 overs with a dot ball, New Zealand 218 for 1, motoring along very well at 7 runs per over. Kane Williamson is 78 of 66. Started relatively watchfully, but after that we've been treated to some enthralling, wonderful stroke play from this giant modern day batter. A glorious square drive of Harris Rauf. That was his first scoring stroke. A lofted stroke over long off of Agha Salman for a 6. What a glorious shot that was. Lofted extra cup drive of Iftikhar for 4. As here he swivels onto that back foot and pulls it round the corner, and that's gone over. Backward square leg for 6. Hassan Ali's first delivery, short in length, on the leg and middle stumps, and Kane Williamson made it look so simple. Waited for it again, picked the spot, and lofted it hard and high over backward square leg for his second 6. Here is Hassan Ali, now to Kane Williamson. Once again pulls him round the corner, will carry down to the backward square leg boundary for 4 more. Brilliant stroke play. Now if any of you think this is tonking going around, you're mistaken. This is brilliant stroke play. Excellent cricketing strokes. The previous one was a 6. But I tell you what, it was short in length. You saw it beautifully, waited for it, swiveled on his feet so beautifully, used the width of the crease, and lofted it over backward square leg for a 6. This one was a controlled pull to backward square leg for a 6. Here is the next one from Hassan Ali. Better delivery. Also kept low on that occasion. Just a trifle low. Back of a length. And once again Williamson wanted to essay that pull. Taken a little bit surprised by that ball that kept low. And Kane Williamson has now crossed 1,000 runs in ICC Cricket World Cups. He's got 1,077 runs against his name. He has done that in this innings, in 24 innings. He's come to the party when his team needed it. 88 years of 69.
Hassan Ali to Williamson. Down the wicket he comes. Takes a few steps to the bowler. And Hassan Ali is also shrewd. Just holds that one back a little bit. And Williamson is content with a gentle push on the offside. Good contest between bat and ball. Both the batters are on 88. A kind of a contest between them as to who will get to the 100 first. Ravindra's 88 of 81. Williamson's strike rate is even better. 88 of 70. Hassan Ali into Williamson, and that's a good ball. Once again a good ball. That jacks back from outside the off stump. And Williamson with an angle bat runs it down to square third man for a single. He's 89. 229 for one. Just one delivery left in this 32nd over. And Damodar, this is some kind of a contest now. We'll have to wait and watch who will get down. That's a no ball. No ball declared. So this will be a free hit now. The last delivery was a no ball, being called a little bit later. And the umpires waited for it. And then finally, umpire Wilson declaring a no ball. Pakistan don't need this. This is a free hit. 11 of this Hassan Ali over already conceded. Rachin Ravindra, 88 of 81. He'll try to take full blast of this free hit. Here is Hassan Ali, short in length, and Rachin Ravindra has pulled him round the corner in the gap between mid-wicket and square leg. They go through for one, they run the second, and Ravindra loses his bat in the bargain, picks it up and completes two relatively easily. And that was a free hit, as we told you, and 200 for one. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. The last delivery was a no ball. We keep saying they're giving too many extras, adding to the number of deliveries. Here is Hassan Ali into Rachin Ravindra. He's lofted in the pickup stroke. Has he got the distance? Yes, he probably has. It goes to the right of us, to the mid-wicket boundary. Now, for me, from the commentator's box, I got the feeling it hit the boundary ropes on the full, but the umpires will wait for the final verdict. They've referred it. We'll wait and watch. Did it drop or did it hit the mid-wicket boundary on the full? We'll get the final verdict. Just inside maybe. An inch or two inside. And we're waiting for the final decision from the umpire still, as the third umpire is having a look at it. Too close to call for declared. Yes, initially one got the impression it probably hit on the full, but just an inch or two inside that mid-wicket boundary. Very expensive over for Pakistan. 17 of that Hassan Ali over. 7 overs for 50 for Hassan Ali. At the end of 32 overs. Kane Williamson is 89. Ravindra is 94. 236 for one New Zealand. तो इस मुकाबले में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में जो खेला जा रहा है विश्व कप का 35वां मुकाबला, टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था बाबर आजम ने, लेकिन उनका फैसला बिल्कुल गलत साबित करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज 168 रन की अभिजीत साझेदारी 128 गेंदों पर कर ली है। दूसरे विकेट के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और रचिन रविंद्र ने। रचिन रविंद्र इस विश्व कप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और अपने शतक के नजदीक पहुंच रहे हैं। यदि वे शतक पूरा करते हैं तो इस विश्व कप में उनका यह तीसरा शतक होगा। 236 एक विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड का स्कोर 32 ओवर के पूरा होने के बाद। रचिन रविंद्र खेल रहे हैं 94 रनों पर और इस मैदान पर सबसे ज्यादा जो रन है वो सचिन तेंदुलकर के नाम पर 11 मैचों में 534 रन उन्होंने बनाए। और न्यूजीलैंड की ओर से फ्रैंकलिन ने बल्लेबाज केन विलियमसन क्रीज के अंदर आ चुके हैं या नहीं। टीवी अंपायर हैं इस मैच के रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड के।